हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे MySQL की DDL कमांड्स की, द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स। हम लोगों ने बात करी थी कि देयर आर 3 मेन कमांड्स इन DDL: create, alter and drop. Create command is used to create a table or a database in MySQL. Alter command is used to modify the structure of the table, and drop command is used to remove either a database or a table from the MySQL. So let's start with the practical implementation of these commands. So let's start. Now, the very first thing, if you work with the MySQL, so the very first thing is I have already opened MySQL, and now the very first command which we should use, that is create database. Here we have to mention the type of object which we are going to create in MySQL. कि create database, database is an object of database. Here database is a object of database, right? What I want to create, मैं क्या create करना चाह रहा हूँ? I am creating a database here, and now after space I have to give the name of the database. Suppose Nitin, right? And now semicolon and enter. Databases already exist. मैंने पहले से दे रखा है, तो let's see कि कितने databases created हैं, right? तो next time ये गलती हमसे ना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या कमांड यूज करेंगे MySQL में? आई विल यूज शो डाटा बेसेस, राइट? शो डेटा बेसेस. So this is the list of databases. All these are the databases which are already created, right? Now, so let's create any other database. For example, create database. And now what should be the name of the database? Now I'll create a database named work, right? Semicolon, create database work. Now the query is okay, one row affected, that means my database is created. Now I want to list the names of the database again. So instead of writing this statement again, show databases, I can use up arrow key, right? One more time. So my command is here, and now press enter, right? So my work database is here, my work database is created already. Now I will work in this database. So first I have to open this database to create a table or work in this particular database, right? तो इस database में काम करने के लिए मुझे पहले database open करना पड़ेगा. तो database open करने के लिए कमांड हम यूज करेंगे use command, use work. तो use कमांड हमारी यूज होगी डेटाबेस को ओपन करने के लिए MySQL में. MySQL में डेटाबेस को ओपन करने के लिए हम लोग use कमांड का यूज करेंगे बेटा, राइट? प्रेस एंटर. तो डेटाबेस चेंज्ड. नाउ आई कैन क्रिएट टेबल्स इन दिस डेटाबेस. अब जो भी मैं टेबल क्रिएट करूंगा, जो भी मैं वर्कआउट करूंगा, वो मेरा इस वर्क डेटाबेस में होल्ड होगा, राइट? तो लेट्स स्टार्ट. create table. Now मेरा जो ऑब्जेक्ट नेम है वो यहां पे चेंज हो गया, दैट इज नाउ टेबल. पहले हमने क्या बनाया था? डेटाबेस. पहले हमने क्रिएट किया था डेटाबेस, राइट? नेम्ड वर्क. नाउ आई एम क्रिएटिंग टेबल, राइट? एंड नाउ हियर आई विल गिव द नेम ऑफ दिस टेबल student. I'll give the name of this table student. This is my student table. Now आप एक लाइन में लिख सकते हो पूरा, या फिर अलग अलग लाइंस में आप लिख सकते हो. मेरी हैबिट है मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं, तो I'll press enter. This arrow symbol is a continuation symbol. This arrow symbol is a continuation symbol की command is continue in the next line. Now so here open bracket and the field name, the attribute. The first attribute is suppose admission number, ADMNO, right? And the data type should be
int. Data type should be int, and the size should be 3. Right? Now, comma. Int means integer values I can hold here, and now name. Now, for storing a name, we have two data types here. To store the name, we have two data types here. One is char and one is varchar. One is char and one is varchar. So what is the difference between char and varchar? The difference between char and varchar is char is a fixed length data type and varchar is a variable length data type. Char is a fixed length and varchar is a variable length. That means कि अगर मैंने char में 20 स्पेसेस दिए तो इट विल ब्लॉक दोस 20 स्पेसेस फॉर द नेम. राइट? तो अगर मैंने नेम 5 कैरेक्टर्स का फीड किया, जैसे मेरा नाम है नितिन, राइट, और मेरे नेम में 5 कैरेक्टर्स हैं, तो अगर मैं 5 कैरेक्टर्स होल्ड करूंगा तो वो पूरे 20 स्पेसेस का स्पेस होल्ड करके रखेगा. राइट? बट इन varchar, अगर मैं यहां पे varchar लेता हूं और मैं नेम होल्ड करता हूं नितिन, तो मैक्सिमम लेंथ इज 20 कैरेक्टर्स, बट इट विल ऑक्यूपाई मेमोरी फॉर 5 कैरेक्टर्स ओनली. राइट? दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन char एंड varchar. तो हियर टू सेव द स्पेस, राइट, टू सेव द स्पेस बचाने के लिए, मेमोरी कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए, आई विल यूज varchar here and the name should be of 20 characters, right? And size should be maximum, it's a maximum length. इनकी जो 20 है बेटा, ये मैक्सिमम लेंथ है कि मैक्सिमम लेंथ हम 20 होगी, लेकिन अगर कैरेक्टर्स बिलो 20 होंगे तो मेमोरी उतने ही कैरेक्टर्स के लिए ऑक्यूपाई होगी. लेकिन कैर में कंप्लीट 20 कैरेक्टर्स के लिए मेमोरी ऑक्यूपाई होगी, फिर चाहे हम कितने भी कैरेक्टर्स फीड करें. राइट? नाउ नेम, क्लास, सपोज varchar 8, then again comma, marks 1, subject 1, suppose subject 1, or I can say suppose English, whatever you want to take. Int 3 digits, comma, Hindi, HIN for Hindi, integer 3, SST, int 3, science, int 3, maths, int 3. Right? Now, so these are the fields. Right? Now, here I want to add one more field. चलो क्लास एंड सेक्शन हम एक ही में डाल देंगे, नो प्रॉब्लम. राइट? क्लोज दिस एंड नाउ प्रेस सेमीकोलन. राइट? एंड प्रेस एंटर. तो 1 row affected, query okay. Right? Now table is created. Now my requirement is to display the list of the tables. मैं tables की list display करना चाहता हूँ. Then what should I do? Again I have to use show tables. Instead of show databases, I will use show tables command. So it will give me a list of tables available in my current database, that is work. Right? So here table in work, student, only one table is there. Right? Now I want to store data in this particular table. I want to store data in this particular table, right? लेकिन before storing that data, suppose आज मैंने इसको close कर दिया, next time जब मैं इसको open कर रहा हूँ, suppose कल मैंने open किया, तो ये screen तो मेरे सामने होगी नहीं, तो मुझे पता नहीं कि मेरी tables में कौन कौन सी fields हैं, इस student table में कौन कौन सी fields हैं. Then what should I do?
तो टेबल के स्ट्रक्चर को, जिसमें सारी फील्ड्स मेंशन है, उनके डेटा टाइप्स मेंशन है, तो उसको व्यू करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? व्हाट शुड आई डू फॉर दैट? तो फॉर दैट आई हैव टू यूज द कमांड describe, DESC or describe. Either you can write complete describe or DESC and then the name of the table, right? या तो आप DESC लिखो या पूरा describe लिख सकते हो. 4 कैरेक्टर्स अगर आप किसी भी कमांड के लिखोगे तो वो कमांड एग्जीक्यूट होगी बेटा, राइट? और फिर describe and then name of the table. तो describe student, तो it will show you the structure of the table कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं हमारे पास, उनके डेटा टाइप्स क्या क्या हैं, राइट? नल कैरी करेगा या नहीं करेगा, की क्या होगी, अभी हमने की नहीं बनाई, प्राइमरी की हम लोगों ने क्रिएट नहीं करी है, कंस्टेंट्स के बारे में हम अभी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, एंड द डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी. तो ऑल दीज आर कंस्टेंट, वी विल टॉक अबाउट द कंस्टेंट्स इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? नाउ हियर तो स्टूडेंट टेबल हमने डिस्प्ले कर दी, उसका स्ट्रक्चर हमने डिस्प्ले कर दिया. तो डिस्क्राइब कमांड इज यूज्ड टू display the structure of the table. Now next my requirement is to store some values in this table. तो values store करने के लिए हमें DML statements की requirement होगी, right? तो DML statement अभी हम बाद में बात करेंगे, कि अभी हम DML statement पे बात नहीं कर रहे हैं, आज हम पहले DDL statements की बात कर रहे हैं. तो अब suppose ये टेबल क्रिएट होने के बाद अब मुझे याद आया यार कि मैंने इसमें 2 फील्ड्स तो अभी डाली नहीं है, टोटल एंड परसेंटेज, मुझे वो भी रिक्वायर्ड है. तो अब उसके लिए मैं क्या करूं? टोटल और परसेंटेज के लिए. तो फॉर दैट टू स्टोर टोटल एंड परसेंटेज, व्हाट आई डू, आई हैव टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेबल. तो फॉर दैट आई हैव टू यूज ऑल्टर कमांड. तो ऑल्टर टेबल, राइट? DDL कमांड्स के साथ नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मैंडेटरी, कि मैं किसको मॉडिफाई कर रहा हूं, किसको मैं ऑल्टर कर रहा हूं, राइट? तो ऑल्टर कमांड के साथ हमें टेबल कीवर्ड यूज करना मैंडेटरी है, राइट? द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट विच आई एम गोइंग टू मॉडिफाई. तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, राइट? ऑल्टर टेबल स्टूडेंट एंड देन नेक्स्ट लाइन add clause is used to add a new field. This add clause is used to add a new field in a table. So add total int, suppose 3 and then semicolon, right? So it will add new column in the table, right? One field is added. Now again describe student, so it will show you the new field here. So this is my new field, total, right? Now I want to add percentage field also. So what I will do, again alter table student, add percentage PER float. Now the data type will be float beta. So float five comma 2 semicolon, right? तो ये float data type आ गया मेरा with 2 decimal places. Now again describe student, so here is my percentage column, right? So this is my alter command. Now suppose I want to drop one column, my requirement is to drop one column from the table. I don't want percentage column right now, right? इस समय मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है परसेंटेज कॉलम की और मैं इस परसेंटेज कॉलम को रिमूव करना चाहता हूं. Then what should I do? Now to remove this column again I have to use alter command, right? कॉलम को रिमूव करने के लिए भी मुझे alter कमांड की रिक्वायरमेंट होगी. तो अगेन alter table student
and now here I have to use the clause drop. Now I have to use the clause drop. So this is my drop clause and the name of the column, percentage, semicolon, right? Column is dropped, but I have to check. Again, describe student, and now percentage column is dropped, right? Now say suppose I want to increase the size of the name field, right? I want to increase the size of the name field. Instead of 20, I want to make it 30. The size of the name should be 30 characters. Then what should I do? Alter table student, modify name varchar 30 and then semicolon, enter, right? Now let's check. Again, describe student, and now the size is 30, right? Now the last DDL command, that is drop command. Now so drop command is used to remove the database objects from the database. Drop command is used to remove the database objects from the database. कि अब मुझे इस database में से एक database object को remove करना है, that is the table. I want to remove this table, right? Now what should I do? So I have to use drop command. So drop table student. अच्छा, आपने एक चीज नोटिस करी कि यहां पे हम ड्रॉप कमांड यूज कर रहे हैं और अभी ऊपर ऑल्टर के साथ हमने ड्रॉप क्लॉज यूज किया था, राइट? तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से माइंड में रखनी है. कई बार इंटरव्यूज में या आपसे वाइवाज में ये क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि हाउ मेनी वेज आर देयर टू यूज ड्रॉप इन MySQL. तो देयर आर 2 वेज, या ये कह लो कि ड्रॉप कमांड 2 तरीके से यूज हो सकती है, एक एज अ क्लॉज एंड एक एज अ कमांड. एक एज अ क्लॉज एंड एक एज अ कमांड. तो क्लॉज यूज होगी तो ऑल्टर के साथ कॉलम को रिमूव करने के लिए, और कमांड यूज होगी टू रिमूव अ टेबल और अ डेटाबेस, राइट? तो ड्रॉप टेबल स्टूडेंट. तो हियर ड्रॉप इज अ कमांड and here drop is a clause. So here I am using drop as a command. So drop table student, semicolon, enter. So table is removed, right? Now drop database work. So it will remove the work database from the MySQL database. तो first show databases. अच्छा, अगर मैं यहां पे फिलहाल कमांड दूं show tables, जैसे भी हम ऊपर यूज कर रहे थे show tables, राइट? तो अगर मैं यहां पे show tables कमांड दूं तो क्या होगा? Can you predict the error कि which type of error it will display? Okay, I'll tell you. नो डेटाबेस इज सिलेक्टेड. टेबल नहीं देगा कि टेबल नॉट क्रिएटेड, कि टेबल नॉट फाउंड, राइट? इट विल गिव यू द एरर नो डेटाबेस इज सिलेक्टेड. रीजन कि हमने यहां पे डेटाबेस रिमूव कर दिया है. अब डेटाबेस ही नहीं है तो वो टेबल पे वर्कआउट कैसे करेगा, राइट? तो इट्स ऑल फॉर टुडे. होप दीज DDL कमांड्स आपको समझ में आई होंगी बहुत अच्छे से. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो प्लीज डू कमेंट. और कोई भी टॉपिक आपको सीखना है, कोई भी टॉपिक आपको स्टडी करना है, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम है, तो यू कैन मैसेज मी, यू कैन कमेंट, एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक. तो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट to share this video
like this video and subscribe my channel. So it's all for today. Good day and take care yourself. Bye bye.